here, where is my spotlight? Here is spotlight. So this is minus 10. This is 42 decimal. D stands that decimal. If you use D as radix, so 42D means 42 in decimal, and this B stands for binary, H stands for hexadecimal, O stands for octal. And if there is no radix by default, so then the integer constant is in decimal. Hexadecimal begins with the letter must have a leading zero. Characters and strings are in single quotes or in double quotes. दिस इज एस्की टेबल. ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था. ये एस्की टेबल है. And with this ASCII table or ASCII character or ASCII code, we give labels, numeric labels to different characters. So like on keyboard, so we are founding many characters, and this is our digital computer. So in digital computer only will deal with digits, nothing else. So then you have to give the digital or digit based figure to everything. तो हमने कीबोर्ड पे अगर डैश डॉलर साइन हैट एंड स्लैश प्लस माइनस स्टार, so if there is any character on keyboard, so you have to give them a numeric code. So while by pressing any character from keyboard, so the corresponding code will be moved into your register. तो रजिस्टर में जाना है और रजिस्टर आपके सीपीयू के अंदर होते हैं. अंदर की जो स्टोरेज होती है उसको हम रजिस्टर्स कहते हैं. सीपीयू के जो बाहर की स्टोरेज होती है उसको हम रैम कहते हैं. और रैम से भी बाहर की जो स्टोरेज होती है उसको आप एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं. वो हार्ड डिस्क भी हो सकती है, वो सॉलिड स्टेट डिस्क भी हो सकती है, वो टेप भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है. फिर ये आपके पास सीपीयू के अंदर के रजिस्टर्स हैं. कुछ जनरल पर्पस होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ स्टैक रजिस्टर्स होते हैं, कुछ सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं. एंड जनरल पर्पस रजिस्टर्स आर दोज और दैट सो whom we play during our arithmetic operations. जैसे आप सी में आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स डिफाइन करते हैं, तो in that we are storing, retrieving, playing with the general purpose registers. And if you want to store anything in this EAX register, so you have to write assembly code like move EAX comma 50. So this statement will move 50 into EAX. EAX is one register of CPU. And if you write over here H, so H stands for that this 50 is hexadecimal. If you write O over here, so it means 50 is octal. And if you write B, 50 is binary. But in binary 0 and 1 is there, so this 5 is not a valid digit in binary number. So uh, how many students? Only 24 students. I think. What is the size of class? Is there any CR or GR? क्लास में टोटल 24 है. अच्छा ओके, फिर ऑलमोस्ट 9 above. Okay, I think today mobile service is not no more there in Faisalabad. There is no mobile service, so that's why maybe some students are used to connect with 4G or 3G. So then they will not able. आप सारे डिफरेंट सिटीज में है और मोबाइल सर्विस आ रही है. Yes, sir.
बहरहाल in फैसलाबाद and in Sindh on TV I listen from TV, and in Faisalabad I am sitting in Faisalabad, no mobile service. आज नहीं है सिंध वाली साइड पे, तो टीवी पे बता रहे थे कि नहीं है. So maybe due to that purpose, so maybe some students are used to join through 4G or 3G. So 4G and 3G is missing today in the many part of the country. Okay, so these are different registers, and and uh, like you may move any value from this. Now, then there is some special names like AX, and usually there is extended AX. So EAX. So we in flow, so we will say AX. तो E हम नहीं बोलेंगे आमतौर पे, हम इन फ्लो में AX. So AX is a cumulative register, and like if you say multiplication or division, so by default the result will be stored in AX without giving naming. Then EX is your counter register, so automatically used by loop instructions. So without explicitly saying that use CX, so automatically this is the counter register. And then SP is the stack pointer, SI and DI are the source and destination index, BP is the base pointer. Then this EAX is your register, and the size of register is 32 bit. And if you want to use half, so that AX is the half, and if you want to use quarter or half of the AX, so this part is named as AL and this part is named as AH. Uh, if we write in assembly this statement move AL comma 15, so then this 15 will be moved into this AL part, and if you say AH, so then in AH part, and if you say AX, so then in AX part, if you say EAX, so then EAX. So there is one big register, 32-bit based register, and you split that into further uh, smaller parts, AX, or if you again go to split AX, so AX is divided into two, AL and AH. This story is applicable on all registers. So instead of AX, and if you use CX, so this is the CX. So same uh, theory on all registers. And usually now your computers are 64-bit based machines. So it means all register size of your processor is 64-bit. The size of the register is usually known as the size of the machine. 486 386DX से ऑनवर्ड जो है वो 64 बिट का मशीन आ गई है. एंड नाउ इफ यू 64 बिट का मतलब है कि आपका जो रजिस्टर का साइज है वो यहाँ से और ग्रो कर गया ऐसे करके. एंड नाउ द टोटल साइज ऑफ योर रजिस्टर इज 64 बिट यहाँ तक. अब अगर आप 64 बिट वाली मशीन में 32 बिट यूज़ करें और 32 बिट यूज़ ना करें, इट मीन्स कि यू आर यूजिंग दी हाफ कैपेसिटी. आप आधी कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो, तो उसकी जो थ्रूपुट है वो थोड़ी हो जाएगी, मशीन की हाफ हो जाएगी. लिहाजा 64 बिट
मशीन जो होती है, इसका मीनिंग होता है कि जी आपका जो सीपीयू है, उसके जो रजिस्टर्स हैं, उसका साइज 64 बिट है। एंड नाउ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का भी है, 64 बिट का भी है। एंड ऑन 64 बिट मशीन, सो यू हैव टू इंस्टॉल 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उस पर आपको 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगाना है। एंड this is the lower side, this is the lower side, and this is the upper side. And if you talk EAX, this is the lower side, this part, and this is the upper part. And if you talk about 64-bit, uh, then this portion is the lower part, and this portion is the upper part. Now there are some flags, and there is some segment registers: code segment, data segment, stack segment, extra segment, then again extra, and then again extra segment. And our code, usually if you write any code, that code is comprising of some code, some data part, and some stack part. तो होता क्या है कि आपके पास मेन मेमोरी, कुछ इस तरह से मेन मेमोरी है। तो आपने इस मेन मेमोरी को डिवाइड किया होता है into different parts. So you may say that this part will be used to write code, for write data, for write stack, and rest are for different extra segments. So you divide your memory into segments, and one segment is to write code, then other is to write data, and stack, and so on. And the address of this uh, code segment address, so that will be stored in code segment register, and data segment address in data segment, stack address in stack. So in CPU, so there are some registers known as segment registers, and you plan design your memory into different segments, and each segment address will be stored in CPU segment registers. तो सीपीयू के पास सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, उसमें वो मेमोरी के जो सेगमेंट्स बनाए होते हैं उनका एड्रेस रखता है नोट करके। अब फर्ज करें सीपीयू ने कोड लिखना है मेमोरी में, सो इट विल गो टू सेगमेंट रजिस्टर, विल गेट द एड्रेस ऑफ दैट एरिया, एंड देन विल गो टू मेमोरी। पहले सेगमेंट रजिस्टर से देखेगा कि वेयर इज कोड, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ कोड सेगमेंट। तो फिर वहां से एड्रेस उठाएगा, फिर वो मेमोरी में जाएगा, फिर उस सेगमेंट में पहुंचेगा, फिर उस सेगमेंट में पहुंचने के बाद फिर उसके पास एड्रेस होता है कि इस सेगमेंट में पहुंचने के बाद उसने कितने वर्ड में जाना है, फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दैट। ये आपके होते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। तो फ्लैग में कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग, यूजरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, एंड सो ऑन। अब ये होता है कि अगर आपने फ्लैग जो होते हैं, ये लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशंस के स्टेटस को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से मूव AH, 50,
it will move 50 to AH. And if you say 150, okay. If you say 200, okay. If you say 0, so it means the result of last operation is 0. So after operation, so if you go to flags, so then 0 flag will be 1. And if you write over here 255, so this is the highest value. So 255 means the size of AH is 1 byte, 8 bits. And 255 means this. This is 255. So this is the highest value. And if you want this, so this is 9 bit and the space is 8 bit. So now there is overflow. So overflow flag will be 1. And if there is carry uh, from the last operation, so then carry flag will be 1. And auxiliary flag will be 1 if there is carry out from fourth bit, and so on. Carry flag क्या होता है? Set when unassigned arithmetic result is out of range. Unsigned arithmetic operations. तो जो इसको मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ आई से कि जी जो आपका ए एच है, ए एच से मुराद है रजिस्टर आई एच, तो इसके अंदर होती हैं 8 बिट्स होती हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। सो देर इज 8 बिट्स। इसमें जो डेटा जा सकता है वो डेटा क्या जा सकता है? द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसमें क्या जाएगी? 8 times 0। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये 0 जाएगा इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें। So 8 times 0. And what will be the maximum value? So the maximum value will be this. This will be the maximum value, 8 times 1। तो अगर हम बोलते हैं कि जी इसकी रेंज क्या है, सो द रेंज इज 0 to 255। सो ये जो 8 times 1 है, दिस इज इक्वल टू 255 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम बोलते हैं कि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 255 है, तो इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं जा सकती। अब अगर आप ये कहें इसमें मूव ए एच 256, तो ये आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज है। सो द रेंज वाज, मैक्सिमम रेंज वाज 0 to 255 and 256 is one more than the biggest value, आउट ऑफ रेंज। अगर ये आउट ऑफ ऐसा आप करेंगे तो होगा क्या? 256 का जो बाइनरी है वो क्या है?
वो ये है। ये 256 है। तो इसमें 256 का मीनिंग है कि जी ये 8 बिट्स जो है ना ये तो जाएंगे आ, इनमें, इसमें जाएंगे, इन सब में चले जाएंगे। 8 बिट्स है और 8 जीरो जो है ना उनमें अकेले अकेले में चले जाएंगे। और जो ये लास्ट वाला है, क्योंकि वो उसमें जगह ही 8 की थी, तो ये जो 1 है ये ट्रंकेट हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि 1 आया कहाँ से है, तो बेसिकली इफ यू consider this thing that this comes as a result of carry out from this bit। ये जो लास्ट वाली बिट थी इसमें से कैरी आउट हुआ, देयर इज कैरी फ्रॉम लास्ट बिट। अच्छा जी, ये जो कैरी फ्लैग है कैरी हुआ है लास्ट बिट में से, तो दैट्स वाई कैरी हुआ है, तो जो आपका कैरी फ्लैग है, दिस कैरी फ्लैग, तो ये 1 हो गया। लास्ट बिट में से जब कैरी आउट होता है तो देन कैरी फ्लैग 1। एंड द मीनिंग दैट द कैरी फ्लैग इज हाई, इट मीन्स योर रिजल्ट इज आउट ऑफ रेंज। अगर कैरी फ्लैग अप होता है, होता कब है कि जब लास्ट बिट में से कैरी आउट होता है। जब लास्ट बिट में से कैरी आउट हुआ, लास्ट बिट मीन्स कि उसके बाद वो तो आखिरी बिट थी, उसमें से जो कैरी हुआ उसको स्टोर करने के लिए तो जगह ही नहीं थी। तो जगह नहीं थी तो इट मीन्स कि वो आपका रिजल्ट आउट ऑफ रेंज है। Up to now, if there is any question, please raise hand. जी महविश साहबा, महविश अली। सर नवाजिश अली। मुझे तो महविश ही लग रही है। सर कैरी आउट कब होता है? कैरी आउट, कैरी कब होता है जब आप डेसिमल की जब बात करें, आप 5+6 करें तो कैरी हो गया ना। ओके सर। आप ये देखें, मैं इसमें कैरी आउट बना के दिखाता हूँ आपको। अगर हमारे पास ये एक फिगर हो, मैक्सिमम वैल्यू 8 × 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है, सो दैट मैक्सिमम वैल्यू इस ये क्या होती है, ये 255 होती है। इसके अंदर अगर आप +1 करें, ये 1 किया आपने, ठीक है, और ये आपने इसको करना है, प्लस करना है, और इसमें देखें कि ये नीचे लाइन लगा दें। अब ये प्लस करना है हमें, तो ये 255 +1 करेंगे तो आंसर क्या आना है, 256 ही आएगा ना। ये देखें ये 1 है, और इस लाइन को अगर मैं बड़ा कर लूँ यहाँ तक, तो ये 255 +1, तो आंसर क्या आता है, 256 आता है ना। जी सर। तो 256 का जो बाइनरी होता है वो 9 टाइम्स 9 बिट्स होता है, तो 1 के बाद 8 जीरो होते हैं। अब आप इसमें देख लें, इन दोनों को जमा करें आप। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी, और वैसे भी डिस्कनेक्ट होने लगा है तो कनेक्ट होके दोबारा आ जाइएगा।